Good morning children. Myself Sarita Chaudhary, TGT science teacher from St. Joseph Public School Tonk. Students, we use variety of food substances in our daily life like curd, lemon, orange, sugar, salt. Do all these edible substances they have same taste? No. Some of them they taste sweet, some of them they taste salty, some are bitter, some are sour in taste. So on this basis and other chemical properties also, these edible substances are generally categorized into acids, bases and salts. So here we are going to start a new chapter of science, which is chapter number 5, acids, bases and salts. And in today's video we are going to cover introductory part of these acids, bases and salts. So let's start with it. First of all, we are starting with the acids. And acids के अंदर, let's take few examples. If we taste lemon, if we taste curd, if we taste oranges, if we taste tamarind, what is the basic common feature? What is the common taste of all these edible substances? They are sour in taste. So the substances which are sour in taste, they are categorized into this category of acids. Having sour taste is not the enough criteria to define acids. Though you will study in detail about acids, bases and salts in your 10th standard students, but in 7th standard, still I just want to tell you all these things in the basic, हमारा at least basic concepts that should be clear. तो हम इनको बेसिक से ही स्टडी करेंगे. 10th क्लास के अंदर इनका और elaborated form we are going to study. So acids के लिए the having sour taste, that is not the common criteria. हम किसी भी sour substance को acid के अंदर categorize नहीं कर सकते हैं. What is the basic feature of acids? Acid की common जो property है वो क्या होती है, उसको समझने के लिए let's take few examples. If I write hydrochloric acid, the formula of hydrochloric acid is HCl. Formula of nitric acid, it is HNO3. Formula of sulfuric acid, it is H2SO4. Carbonic acid, it is H2CO3. So all these are the formulas of different acids. What common you can observe in all these formulas? It is the presence of hydrogen atom. In सबके formulas के अंदर hydrogen की presence common है. So again, if we will say that presence of hydrogen is the indication that the substance is the acid, that is again not correct, not completely correct. थोड़ा और हम information add on करते हैं इसके अंदर. So when these substances they are dissolved in water, that time they all commonly produce hydrogen ions, and the symbol of hydrogen ion is H plus. तो ये जो HCl है, it is going to break in water in H plus and Cl minus. ये जो HNO3 है ये भी ब्रेक हो जाएगा वाटर के अंदर to make H plus and NO3 minus. So all these acidic substances when they are dissolved in water, that time they produce hydrogen ions. और फॉर्मूला सिंबल क्या है इनका H plus. So अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, then we can surely say that that substance is an acid, कि वो सब्सटेंस एक एसिड है. कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. Like what is the formula of glucose? Glucose का formula in the photosynthesis process आपने पढ़ा होगा. It is C6H12O6. So this is the formula of glucose. Right. So in this formula again you can see there is a hydrogen atom. यहाँ पे hydrogen present है. But still glucose is not sour in taste. It is sweet in taste, right? That means ये एक acid नहीं है. हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, फिर भी एसिड क्यों नहीं है?
because when it is dissolved in water, it doesn't produce the H plus ions, ये hydrogen ion produce नहीं करता. That's why it is not considered as an acid. तो अब हमें समझ में आ रहा है कि acid का एक basic feature क्या है, that all the acids they have hydrogen atom in their formulas, and moreover that hydrogen atom present होना is not enough. When they are dissolved in water, that time they produce hydrogen ions, H plus ions. तो जो ये produce करेंगे वो क्या होंगे, acids होंगे. The next feature of acid is they are corrosive in nature. What is the corrosive? Corrosive का मतलब क्या है? Whenever strong acids they come in the contact of us, they produce burning sensations. Sometimes they can produce blisters also. जो हम acid attacks के बारे में सुनते हैं, उसमें जनरली क्या यूज करते हैं? Those victims they are attacked by the strong acids. Acids का उनके ऊपर अटैक होता है. तो acids are very corrosive in nature. They can produce burning sensations and may produce blisters also. So these are the few features of the acid. इनके साथ एक और feature यहाँ पे है, the conduction of electricity. जब भी किसी भी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो इन इट्स एक्वस स्टेट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो H प्लस आयन भी रिलीज नहीं करेगा, तब तक वो एसिड की तरह बिहेव भी नहीं करेगा. As soon as it is dissolved in water and it will release hydrogen ions, it will start behaving as an acid and will become a good conductor of electricity. Students, we can consume some of the acidic substances and we cannot consume some of the acidic substances. Like curd के अंदर acid present है, lemon के अंदर acid present है, tamarind that is also having acid. Still we can easily consume them. They do not produce any sort of burning sensation. वो हमारी skin को burn नहीं कर रहे, हम easily उनको eat कर पा रहे हैं, consume कर पा रहे हैं. But on the other hand, if we talk about the hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, so these substances they cannot be consumed. उनको हम consume नहीं कर सकते. So what is the difference in these two type of substances? There comes the types, the categories of acids. So acids are classified into two categories, which are organic acids and inorganic acids. Let's talk about the organic acids. So organic acids are those acids which are obtained from the living organisms. And who has life? Life, plants and animals, they have life. So those acids which are obtained from either from plants or from the animals, that means naturally जो हम obtain कर रहे हैं, those acids are called as organic acids. What the features these organic acids have? So organic acids they are generally obtained from living organisms like plants and animals, and generally weak. जितने भी organic acids होते हैं वो weak होते हैं, उनका इतना strong sensation नहीं होता. That is why we can consume them. उनको easily अपनी day to day life में use कर सकते हैं, consume कर सकते हैं. Some of the examples of organic acids are here. Like if we talk about orange, lemon, these fruits are basically called as citrus fruit because they contain citric acid in them. If we talk about apples, students, apples they have malic acid. Stings of ants and bees, जब भी आपको red ant bite करती है या आपको bees जब honey bees bite करती हैं तो you feel burning sensation, काफी pain आपको वहाँ पे होता है. That is because red ants and bees they contain formic acid in their stings. If we talk about vinegar which is generally used in a household purposes, हम इसको preservative के form में use करते हैं in the pickles. So vinegar it contains acidic acid. What acid is present in curd? The acid present in curd it is a lactic acid, which is the basic reason for the formation of curd. जो curdling process होता है, milk turns into curd because of the lactic acid. And tamarind जो इमली होती है that contains tartaric acid. So these are the few examples of the organic acid. Let's come to the inorganic acids or mineral acids. Organic मतलब
जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन किए थे. इनऑर्गेनिक मीन्स दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिनरल एसिड. इनको हम आर्टिफिशियल एसिड भी कह सकते हैं. जनरली दे ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स और मिनरल्स से इनको हम यूज करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एंड देन दे आर प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरीज और इन द फैक्ट्रीज. दैट्स व्हाई दे आर दी इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड. These acids are generally strong acids. Being strong, they cannot be consumed by us. हम उनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. But as always, there are certain exceptions. The best exception is the carbonic acid. What is the formula of carbonic acid? Students, it is H2CO3 carbonic acid. Can you just think where this carbonic acid is consumed? Yes, you are right. This carbonic acid is present in all the cold drinks. जो हमारी cold drinks होती हैं, जिनमें fizz produce होती है, bubbles produce होते हैं bottles को open करने से. So those cold drinks, they contain the carbonic acid. And because of this presence of carbonic acid, all these cold drinks like Thumbs Up, Coca-Cola, Pepsi, they produce the sour taste. इनका जो खट्टा taste होता है, वो किसकी वजह से है? Because of this carbonic acid present in them. How this carbonic acid is formed in these cold drinks, that you will study in your senior classes. आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर. So except the carbonic acid and one more, that is a phosphoric acid. Except these two acids, all the inorganic or mineral acids are strong acids. Example of inorganic acids are hydrochloric acid, nitric acid and sulfuric acid. So nitric acid is the acid which was the first acid which was synthesized. सबसे पहले जो inorganic acid की discovery हुई थी, synthesize जो हुआ था, that was the nitric acid. And one more interesting thing about the sulfuric acid. So the sulfuric acid is called as the king of chemicals, as its divergent uses. Dyes, detergents, fertilizers, explosives, car batteries, काफी सारी चीजों के फॉर्मेशन में ही बेसिकली यूज होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल्स. सो दैट्स ऑल अबाउट द एसिड्स. हमने बात की अभी तक एसिड के बारे में, इनकी कॉमन फीचर्स के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस नाउ, कि बेसिस क्या चीज है. स्टूडेंट्स, आपने कभी कुकुम्बर को यूज हम जनरली करते हैं, राइट? कुकुम्बर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर. रफेज की फॉर्म में इसको हम सैलेड की फॉर्म में यूज करते हैं. So some of the times you must have observed कि कई बार कुछ ऐसे कुकुम्बर होते हैं, खीरे होते हैं, they have bitter taste, वो बहुत ही bitter taste के होते हैं, right? तो एंड सोप्स को जब भी हम टच करते हैं घर पे, जो बाथिंग सोप्स होती हैं, what is their specialty? They are having the slippery touch. उनको जब हम टच करते हैं between our fingers, we feel they are very soapy and they are slippery. So these substances which are bitter in taste and soapy or slippery in touch, they are called as bases. So all the soapy touching substances, slippery substances, bitter substances, they can always not considered as the bases, as or the source substances are not the acids, right? So यहाँ पे bases की definition को define करने के लिए basic criteria क्या है? And to understand it, let's take few examples of bases. If we talk about the sodium hydroxide, the formula of sodium hydroxide is NaOH. Potassium hydroxide formula is KOH. Calcium hydroxide formula is CaOH whole twice. These all are the bases. What common feature you can observe in their formulas? Yes, you are right, friends. It is the presence of OH group. This OH group is common in all these formulas. Friends, this OH group is called as hydroxyl group. And presence of hydroxyl group is always not enough to define the bases, as presence of hydrogen was not sufficient to define acids. Whenever these bases are dissolved in water, जब ये अपनी aqueous state में होंगे, water के अंदर dissolved होंगे, that time these bases they produce OH minus ions. These ions are called as hydroxide ions. So अगर कोई भी chemical substance
जिसके फॉर्मूला के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड मोर ओवर दैट व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड इफ इट प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन, that is the definition of the bases. That substance would be considered as a base. Again, as we discussed about the formula of glucose, तो ग्लूकोज के फॉर्मूला में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे, इसलिए एसिड नहीं था. द रीजन वाज कि वाटर में डिसॉल्व होकर H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता. इन द सेम वे इसके फॉर्मूला में OH ग्रुप भी प्रेजेंट है. अगेन इट इज नॉट अ बेस बिकॉज ऑन डिसोल्यूशन इन द वाटर इट डजंट प्रोड्यूस द OH माइनस आयन. So we were talking about the bases. Bases की common features की बात कर रहे थे. Bases are generally bitter in taste and they have slippery or soapy touch. They have OH group, they contain hydroxyl group and they produce OH minus ions when dissolved in the water. Along with that, bases are also corrosive and caustic in nature. आपने देखा होगा अगर काफी लंबी टाइम तक मदर अगर यूटेंसिल्स को वॉश कर रही है और शी इज वॉशिंग क्लॉथ, सो व्हाट शी इज यूजिंग सोप. तो सोप के अंदर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश ये प्रेजेंट रहते हैं. एंड काफी टाइम तक इनको यूज करने के बाद जो स्किन है वो थोड़ी रफ सी हो जाती है, राइट. समटाइम्स वी फील दी हीट ऑल्सो, समटाइम्स वी फील बर्निंग सेंसेशन ऑल्सो. So bases, most of the bases they are also corrosive or caustic in nature. These bases are also good conductor of electricity, but the condition is when they are dissolved in water, because जब वो water में dissolve होंगे that time only they are going to produce OH minus ion. These OH minus ions are responsible to carry electricity, to carry electrical charge. So these bases are again classified into strong bases and the weak bases. जो हमने बात की थी अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कास्टिक पोटाश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो सोप के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. These bases are the examples of the strong bases. और एक कॉमन हम एग्जांपल यूज करते हैं बेसिस का, विच इज कॉल्ड एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस. This milk of magnesia, students, it works as an ant acid. एक ant acid की तरह work करता है. Now a big question arises, what the ant acids are? Those chemical substances which can cancel out the effect of acids. They are called as ant acids. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब भी हमें एसिडिटी हम फील करते हैं ड्यू टू ओवर ईटिंग और ड्यू टू द एक्सेसिव ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड, तो जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कैंसिल आउट करने के लिए जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट्स यूज की जाती हैं. एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ वीक बेस, इसको हम इजीली कंज्यूम कर पा रहे हैं. So we have discussed about the features of the bases. कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड बात कर चुके हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्टिंग्स ऑफ वास्प. जो बीज हैं उनके स्टिंग्स के अंदर तो एसिड प्रेजेंट रहता है, तो एसिड की इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बेस को यूज करना पड़ेगा. तो अगर कभी हनी बीज बाइट करती है ना, तो उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिंपली यू कैन रब सोप ओवर देयर. आप सोप को वहां पे रब कर लो, जो बर्निंग सेंसेशन है दैट विल बी रिमूव्ड. वी कैन इजीली गेट रिड ऑफ दी दैट पेन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय दी स्टिंग्स ऑफ दी हनी बीज और एंड्स. But what if a wasp bites us? जो येलो कलर के इंसेक्ट्स होते हैं wasp, वो अगर बाइट करें तो वहां पे हमें क्या अप्लाई करना चाहिए? So these wasps they contain base. तो बेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए वी नीड टू यूज दी एसिड. तो अगर किसी वास्प ने बाइट किया है एंड इफ यू आर सिंपली यूजिंग द लेमन जूस, आपने लेमन जूस वहां पे अप्लाई कर लिया, तो दैट बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्टिंग ऑफ वास्प दैट कैन बी रिमूव. उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. एंड कुकुम्बर के अंदर भी जो बिटर कुकुम्बर्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? दैट इज द बेस. सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिस. द लास्ट कैटेगरी इज सॉल्ट. नाम से ही पता चल रहा है, विच आर सॉल्टी इन टेस्ट. And how these salts are produced? So these salts are produced by many more chemical reactions, equations, chemical processes produce करते हैं.
Generally, they are produced by the combination of acid and base. जब भी एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. आपने बहुत सारी मेडिसिन जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो उन मेडिसिन के ऊपर काफी सारे केमिकल सब्सटेंसेस के नेम रिटन रहते हैं. What those chemical substances are? Those are the salts. वो salts होते हैं. So that's all about our today's video. We learned about the basic features of acids, bases and salts. We'll continue our chapter in next video. Till then, thanks for watching.